Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the types of joints in the human body. Firstly, what is a joint? Joint is the place where the two bones meet. Joint is the place where two bones meet. Suppose आपकी बॉडी में अगर जॉइंट्स ना हो तो क्या होगा? आपकी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, नहीं होगा ना मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इन योर हैंड इफ द पार्ट दिस इज कंसिडर्ड, अगर आप अपने इस वाले पार्ट को देखेंगे, दैट इज मूवेबल. Is this bone is movable? Not. But you can bend your hand from here. You can bend your hand here. Your leg also. That is the point of joint where the two bones meet. Now firstly discuss the types of joint in human body. We have two types of joint. First one is movable and second one is immovable joints. First one is and second one is movable means to say where the bones can move. आपका वो जॉइंट जहां पे आपके बोन्स क्या कर सकते हैं? मूवमेंट शो कर सकते हैं. बट द सेकंड पॉइंट इज इमूवेबल जॉइंट. इमूवेबल जॉइंट्स आर द जॉइंट्स इन विच द बोन्स कैन नॉट मूव. ओके, फॉर एग्जांपल द जॉइंट्स इन द स्कल. आपकी स्कल कहाँ है? आपके यहाँ पे. यहाँ के जो जॉइंट्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? मूवेबल नहीं होते. दीज आर इमूवेबल जॉइंट्स. सेकेंडली होते हैं आपके पास मूवेबल जॉइंट्स. मूवेबल जॉइंट्स लाइक अगर हम आपके फेस की बात करें, आपके फेस में सिर्फ आपका जो ये वाला जो होता है, लोअर जो, दैट इज मूवेबल. दैट इज मूवेबल. यू कैन मूव योर लोअर जो. चेक आउट. दैट इज मूवेबल. Which jaw is movable? Lower jaw. In your facial bones, only the lower jaw that is present here is movable. Rest of all the joints are immovable. Second is in your neck. Which joint is present in your neck? That is pivot joint. That is pivot joint. You can move your head. You can move your head along this side also. Next is your shoulder. In your shoulder, the joint is present ball and socket joint. Ball and socket joint. In this type of joint, we have one bone like the ball and second one is like the socket, like this. Okay, that is ball and socket joint. Third point is your elbow. In your elbow, which joint is present? Hinge joint. In your wrist, gliding joint is present. In your elbow, hinge joint is present, and in your wrist, gliding joint is present. Let us discuss these joints. Hinge joint, in which the movement of the bones can possible in only the one direction, like your door also. That is hinge. That is hinge. You can move your door only a single side, not to the outside. Like your elbow, you can move your hand this side, your legs also, in your knee also. Your knee can move in the single side. That is hinge joint. After this, the gliding joint. Gliding joint is present in your wrist, in which the bones are present like this. Glide means क्या होता है? फिसलना. ये फिसलने वाले होते हैं जॉइंट्स आपके. अगर आप बहुत ज्यादा क्या करते हैं, एकदम से फिसल जाते हैं, तो क्या होता है? आपके ये वाला पार्ट अगर आपकी जो सरफेस होता है उसको टच करेगा तो ये फिसल के निकल जाता है. यहाँ से आपकी जो कलाई की हड्डी होती है वो निकल जाती है. ओके, सेम आपके पास जैसे फोर लिम्स में होता है ना, ऐसे ही आपके पास हिंड लिम्स, लोअर जो पार्ट होता है उसमें पॉसिबल होते हैं जेम्स. हिप्स में होते हैं आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड. इन योर नीज, hinge joint. Which joint is present in the knees? In the ankles, which joint is present? Gliding joints.
जैसे आपके पास अपर लिम्स में जॉइंट्स होते हैं, सेम आपके क्या होते हैं लोअर लिम्स में. योर हैंड्स एंड योर लेग्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर. शोल्डर एंड हिप, which joint is present? Ball and socket joint. Second, in your knees and elbow, which joint is present? In the wrist and the ankle, which joint is present? Gliding joint. And the last, the neck has pivot joint. Okay, thank you.